Chudi, Yeah, there are so many other stories. So लड़के लोग क्या था? पता नहीं उपाय तो कि तो वर्धा में आए थे मेरे जो दादाजी का पापा है उनसे बात है जस्ट बात करने के लिए गए तो उन्होंने ट्राई कर दिया बोला कि हम ऐसे ऐसे लोगों से बात नहीं करते हैं 1947 नहीं 1967 नहीं सोचिए क्या होगा 1971 5 6 7 ये मैं actually when I used to teach history for 10th ICSE, I used to show this history सारा all rounder हो वो ऐसा रहता है what could I be history because we had हिंदी में ये देखो this you will come to know what was India ठीक है Sarojini Naidu she was the total leader total what वो मस्केश्वर का दिखाऊं not complete हाँ चलेगा सर nightingale but that is little bit of सर वो हाँ वो फ्रेंडशिप वाला थी तो yes there are 2-3 small countries which are close to China सर वो पढ़ी थी कौन ये नीचे का नीचे नहीं वो वर्ड पढ़ी थी कौन सा है ये हाँ यही वाला it is his name my dear King's Lodge and Tibetan people have fought for India Nepalis have fought for India you don't know it's freedom के लिए लड़ा है करके तो हाँ ये थोड़ा सा truth है ना सर कैमरा थोड़ा टिप नहीं वो नहीं जाएगा मैं जब तक ये भी करेगा शॉर्ट वाला वो हाँ वाला जब तक मैं ये कैमरा नहीं करेगा सर प्लस वीडियो मैंने देखा ये छोटा है एंड इट स्पीड ये तो मुझे ऐसे ही चल some person should explain 700 BC का पिक्चर है प्रॉफेट मोहम्मद का बहुत लेट आता है स्टोरी सर बीसीडी एसी के चालू आफ्टर दिस इनका क्राइस्ट का डेथ एंड उसके ऊपर एक डेट आता है ना वहां से फिर उन लोगों ने बीसी स्टार्ट किया एडी इज एना डोमिनी बीसी वाज समथिंग एल्स बिफोर क्राइस्ट वो क्या टाइप किया मक्का स्टोरी ऑफ मक्का मदीना मक्का वर्ष देखा इट्स मक्का ये वीडियो मैं भी पहले पढ़ती 3D पिक्चर I can pair my mobile and do it मेरे पास बहुत सारा अच्छे वीडियोस हैं I don't want to pair my personal links to all the Here begins with the city of Mecca. It said that when Adam and Eve were first expelled from paradise, the two were separated. With Eve having landed near the city of Mecca, अलग ही चल रहा है having used its heavens a similar structure for the angels. But Abraham, Am I wasting the time? Shall we go in? No, yeah. No. This is important. But let's not tell you what's going this. The story of living under the Bakawala Hotel. Who such hotel? दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म का सबसे पाक और पवित्र शहर मक्का है जहाँ हर मुसलमान अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है ये पाकिस्तानी लोग इधर भी जाके भीख मांगते हैं ये जगह हमेशा से ऐसी तो सालों पहले ये जगह पानी और सुनसान उपलब्ध है जहाँ शायद ही कोई जाना चाहता हो
आज की तस्वीरें देख के ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि कुछ टाइम पहले मक्का कैसा हुआ करता था। आज हम जानेंगे कैसे बना है मक्का, इसके बनने के पीछे का क्या है इतिहास। हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। ये सिलसिला मेरे को क्या आस्था नहीं होती है। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है, यह काफी मानी जाती है। मैंने उसी तरह मुस्लिम लोग हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब के 2 शहरों मक्का और मदीना को काफी पवित्र स्थल बताया गया है। हर मुसलमान के साथ ये भी और जीवन में के बाद इन दोनों जगहों में जरूर जाए और मक्का में जाकर काबे का तवाफ यानी परिक्रमा 7 टाइम्स घूमते हैं, जो हम लोग भी परिक्रमा 7 टाइम्स करते हैं। शादी के टाइम टेम्पल्स में भी लैक्स ऑफ पीपल रहते हैं। चाहे वो दुनिया की किसी कोने क्यों न हो। काबा एक ट्यूब साइज की इमारत है। काबा कोई वाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है जिसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 अंदर क्या है लगा हुआ है। काबा की ये भी इसका भी बता ये पत्थर इनके लिए काफी अहम है। इसके चारों तरफ प्रतिमा मस्जिदुल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर करा है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि आज भी लगभग 70,000 फरिश्ते काबे की तवाफ यानी परिक्रमा करने आ गए हैं और नमाज के लिए अदा करते हैं। सात देशों के मुताबिक मक्का में काबे को लेकर भी भी चर्चित है। कहा जाता है जब मुस्लिम्स के भगवान यानी अल्लाह ने पहले 2 इंसान आदम और हव्वा यानी पहली महिला और एडम अमीर तो इनका है, तो they have taken reference. जिसके बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कई साल तक रहने के बाद कुछ मिले, कुछ गैर थी। यही आदम ने हव्वा की मिलने की खुशी में खुदा को सजदा कर शुक्रिया अदा किया था, जिसके बाद उसी जगह में बाद में काबा का निर्माण किया गया। इसके साथ ये होता है जिसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल के साथ देखा इस जगह में निर्माण किया था। इस्लाम तो लग रहा है और उसी टाइम जब सोच रहा था थोड़ा आई एक्चुअली से जस्ट वीडियो का मानना है कि दोनों का कैसे में निकालता भी रहता इस कहानी बहुत सारा कुरान इस तरह के जैसे ये पूरी तरह दोनों कहानी से पहले वो आता है टाइप होल्ड द वर्ड आई से but it is a 20-minute video so take it 10 or 15 मेरा लेक्चर भी तो बाकी है। हाँ you write भगवान शिव का you see how do you do this ये इसमें पूरा डिटेल्स लोग ने बता दिया। हाँ उसको इंग्लिश में टाइप करें ना and let it play fast so that you guys within 10 minutes no problem Hey, tomorrow school or holiday Saturday School. everyone But I'm going for conference. अच्छा ये जल्दी करते देखो ये स्टोरी तो मैंने पहले बार सुना है। इसका भी लोग ने बोला कि हिस्टोरिकल एविडेंस है आ जाएगा। वही टाइटल आ रहा है क्या? हाँ ये फर्स्ट वन प्ले नहीं वो नहीं ज्यादा मैसेज हाँ ये करेक्ट। दोस्तों कल्पना कीजिए वो स्वर्ण त्रेता युग को जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति चारों ओर फैली हुई थी। भगवान राम के समय से कुछ पहले की बात है। अरब की रेगिस्तानी भूमि जो आज मक्का के नाम से जानी जाती है, वह तब मक्केश्वर नामक एक पवित्र नगर था। मक्का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। यहाँ स्वयं भू शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, तब उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। पृथ्वी के उस कोने में जहाँ रेगिस्तान की बालू में छिपे रहस्य थे, वहां के निवासियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव उनके बीच अवतरित होने को व्याकुल थे। अरब के लोग उस समय संस्कृत भाषा में बात करते थे और उनकी पूजा पाठ भी वेदों से प्रेरित था। वे भगवान शिव को अलग निरंजन कहकर अल्लाह जो समय के साथ अल्लाह में बदल गया। अलग मतलब अज्ञेय, निरंजन मतलब निर्विकार। दिन में 5 बार शिव की आराधना करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ दोपहर की तपिश में, शाम की शीतलता में
और रात की गहराई पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, बिल्वपत्र अर्पित किए जाते और मंत्रों का जाप होता। ओम नमः शिवाय की ध्वनि रेगिस्तान को पूजायमान करने थी। Imagine if you could generate video calling soundtracks instantly. इस पर मंदिर वहां का केंद्र था, जहां स्वयं शिवलिंग चमकता था, जो पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ था। इस लिंग में इतनी शक्ति थी कि जो भी सच्चे मन से दर्शन करता उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आती है उस घटना पर जब भगवान शिव स्वयं मक्का पहुंचे। कथा कहती है कि एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने You don't mind, na? पृथ्वी पर आपके इतने भक्त हैं, Too small children to understand. जहाँ रेगिस्तान फैला है, वहां के लोग आपको कैसे पूछते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी भक्ति की कोई सीमा नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इसी बहाने शिव मक्केश्वर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। शिव ने अपना रूप स्थान कर रखा और मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के समक्ष पहुंचे, लिंग से एक दिव्य ज्योति निकली और शिव का सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। भगवान शिव ने वहां कई दिनों तक निवास किया, भक्तों को उपदेश दिए और मां पार्वती भी वहां आई। मां पार्वती का आत्मा एक चमत्कार था। वे आकाश से उतरी और शिव से मिलकर बोली, हे प्रिय, यहाँ की भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। वही ये बात है। उन्होंने साथ में वहां के भक्तों को आशीर्वाद दिया और मंदिर में एक विशेष पूजा की, जहाँ गंगा जल स्वयं प्रकट हो गया। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं है। जैसे याद रखें, कोई भी कथा या कहानी अधूरा नहीं छोड़ सकती। कलियुग की छाया में गहरी गीत की आवाज तक गई। मां पार्वती कैलाश पर व्याकुल देखी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और बोली, तुम्हारे और नई परंपराएं शुरू हुई। लेकिन गुप्त रूप से कुछ भक्त बचे रहे जो रात में इनकी पूजा करते। कथा कहती है कि आज भेदभाव मत करना। यह सुनकर भक्तों का मन शांत हुआ, लेकिन अज्ञानता फैलती गई। मक्का वासी संस्कृत भूल गए, पूजा के तरीके बदल गए, लेकिन शिव की शक्ति वही रही। त्रेता युग के अंत में मक्केश्वर नगर में अंधेरा छा गया था। दुष्ट राजा ने शिवलिंग को अपने कब्जे में ले लिया था और मां भगवती ने कैलाश में प्रकट। हाँ, उसमें नहीं दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए। I will run it faster. Except us no. शिव से संवाद किया। शिव ने उन्हें बताया है कि कलयुग की रक्षा के लिए एक लीला है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जब मक्का में अज्ञानता की छाया और गहरी हो गई और एक सच्चे भक्त ने शिव को मुक्त करने की ठानी। अभी Saudi Arabia doesn't allow this. शिव ने बारे में क्या रहस्य बताया, आइए चलते हैं। मक्केश्वर में उस समय एक भक्त रहता था जिसका नाम था सूर्यवंशी। वह एक साधारण सरदार था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रात में चुपके से शिवलिंग के पास जाकर पूजा करता था। सूर्यवंशी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन किया और कहा, हे भक्त, मेरी कैद का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे मुक्त कर सकती है। एक विशेष पूजा करो जिसमें मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित करो। सूर्यवंशी ने यह बात अपने कबीले के कुछ विश्वासपात्र। शिव की कैद उनकी इच्छा है, मक्का में भटकती है, शिवलिंग की रक्षा करती है। अब मक्केश्वर में परिवर्तन और तेज हो गया। मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया और लोग शिव की पूजा भूल गए, लेकिन उस काले पत्थर में शिव की शक्ति आज भी मौजूद है। कथा कहती है कि जो लोग सच्चे मन से उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, They point शिव का is that the stone, भले के लिए इसे meteorite stone, which was the Shivling stone. यह कथा अभी खत्म नहीं। एक और बड़ा रहस्य बाकी है जो शिव ने सूर्यवंशी को बताया था। वह रहस्य जो कलयुग के अंत से जुड़ा है। मक्केश्वर नगर में अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। स्वयं को शिवलिंग जो कभी त्रेता युग में भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार था, अब एक काले पत्थर के रूप में बदल चुका था। दुष्ट राजा की सेना ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और मक्का वासियों के दिलों में अज्ञानता की जड़ें गहरी हो गई थी। लेकिन भगवान शिव की लीला इतनी गहन थी कि उनकी शक्ति उस पत्थर में आज भी जीवित थी। सूर्यवंशी वो सच्चा भक्त जिसने अपनी जान देकर शिवलिंग की रक्षा की थी, उसकी आत्मा अब भी मक्का की रेगिस्तानी हवाओं में भटक रही थी। यह कथा अब उस रहस्य की ओर बढ़ती है जो शिव ने कलयुग के अंत के लिए बताया था और कैसे मुकेश्वर Today somebody purely go and touches that stone, whatever she did. Saudi Arabia मिट्टी में मिला, इसलिए वो किसी को अलग नहीं। They are asked to drink one water, जम का पानी, जिसमें काऊ का फैट किया। कथा कहती है कि मक्केश्वर का वह काला पत्थर जिसे आज काबा में हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है, वही स्वयं शिवलिंग है। उनका मानना है कि जब लोग काबा के तर्क और दुआ करते हैं,
वे अनजाने में शिव के तांडव नृत्य का अनुसरण करते हैं। यह तमाम 7 चक्रों में पूरा होता है और कहते हैं कि यह 7 चक्रों का प्रतीक है जो मानव शरीर में शिव की शक्ति को जागृत करते हैं। लेकिन सूर्यवंशी की आत्मा शांत नहीं थी। वह हर रात काबा के पास प्रकट होगी और शिवलिंग की रक्षा करती है। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना। What if someone doesn't? They do not, ingest the Saudi brand? doesn't allow, not a single person is allowed to enter without drinking that. जो लोग सच्चे मन से उसे स्पर्श करते हैं, हाँ। शिव का आशीर्वाद होता है। How do you know that each and every person? No Hindus are allowed inside that entire city. Forget about going there. No Hindus are allowed. शिव का काम शिव से हुआ है। लेकिन फिर भी बोला है कि जब ये युद्ध खत्म होगा एक घंटा बाद कोई सूर्यवंशी आके वो टच करना चाहिए। सूर्यवंशी की आत्मा जैसे महाराष्ट्र में एक शिवलिंग का जगह है मालूम है 4 पिलर्स है उसमें से अभी एक आधा पिलर बचा है लेकिन वो 4th पिलर भी गिरेगा दुनिया वो भी शिवलिंग ही जो मंत्र जाप करते हैं और गाया जाता है। ये सूर्यवंशी की आत्मा है जो शिव की प्रतीक्षा कर रही है। शिव की लीला हमें दिखाती है कि भगवान का स्वरूप एक है। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। अलग कल युग में हमें भेदभाव छोड़कर प्रेम और भक्ति पुकारा। मकेश्वर की कथा हमें याद दिलाती है कि शिव हर जगह है, मंदिर में, मस्जिद में, हृदय में। हमें बस अपने मन को शुद्ध करना है और उनकी शक्ति को पहचानना है। ये कथा यही समाप्त होती है लेकिन इसका संदेश अनंत है। Don't fight in the name of the God है ना all God is taking one but it is very few people will understand it is the politicians and the kings who have made us like this common people should understand. I'm putting page number 243 and 242 page number 242 and 243. Now very important, Rockies, Andes, tick करते जाओ 1, 2, then come down, 3 here. No, वो इतना जरूरी है. Himalayas 5, 12, then उतना मुझे भी कर देंगे. तो कुछ भी बोलते. The Zagros name is there. Scandinavian 7, Alps. Urals or Caucasus or Cassius, what it's saying, but you remember Urals, Aram se. And Drakensberg, Atlas. Many people say Atlas is in America. It is not in America, it is Africa. Okay. And Great Dividing Range. Bas. Chalo jaldi mark karo, then we can go with our theory part of the chapters. If you have marked 7 continents, no problem. Let it be that same map, hai na? Mark it first and then name it next. We are told to color the map. I'll mark it. While for that, अच्छा वो colors PP में आपको देख carry your color pencils. No sketch pens are allowed in board exams. I'm told that you will not get any kind of marks for that. But just to make it a little bit best or marks नहीं मिला कुछ है Shall we? Samanya participating with Garba and all that. You're going. The exams are more. I've kept fasting, so this shaving and other things not allowed. And knowledge to the pure vegetarian will be outside food. Nothing. Just for these 10 days. 9 days. The Kashwa thing. So this I've done one for Lord Ayappa. Quite various and where the weights. My mom does that. Sabrimala, he goes. No, But does it in the group? yes. He does not wear any kind of chappal. He does. Are climbing at 7 inch was really tough here. But 7? No, I think so. Giving away 8 and very not good. 8 to 40. You can't even have full stomach, normal food. Can I say? No man. Ah. Khala.
Allah is for one God, who is for one. Who good? हमारा पैर पर का सुन गया था चलते चलते. Shall we? So what are the details as he is asking color schemes? Look here. Generally, green is understood for agriculture, correct? But it is wrong. The color yellow, यहाँ पे 10th में आपको बहुत important है, is for agriculture. Ask why? Why? Because when the fields are ready to cut, it is yellowish in color. Then guess what is this green used for then? Very good. आपको total sheets है. Good marks 10. And then mountains or even the plateaus. This is what they ask you and allow you also. It is brown in color. Okay. And water bodies, no doubt. Water bodies you cannot actually, but then at least writing the color, it is blue in color. What else you find the difficulty? Tell me. So just copy down somewhere in this notebook. This is the color I scheme. know the color scheme. I was just telling. But what does be? Copy down. Agriculture is yellow in color always. Up to 10th, there is a lot of studies you have to do. Labeling has to be there. Name has to be written. Date has to be written. In board It exam. has to be written for each place. Whole number. Yeah. What else you have doubts in your 9th standard maps? So world maps, what you have to remember, continents, water bodies, and these things you have already done. So I think for this exam, we have covered more than 50% of the maps. For the next coming exam, we will cover up the rest of the part. Okay. So shall we start up with the new chapter, or still you have any queries with the maps? No. Sure. Yes. So you are one of the branch which is ahead of all the branches. Insolation, I think you have completed, is it? अगला chapter Atmospheric pressure and winds have to start. ये भी clear करो. ये इसमें दो chapter है atmosphere के, but don't get confused. The one that we have already done was surface structure of the atmosphere, and this we are going to do is atmospheric pressure and winds. So we'll start up with a diagram, and that diagram will clear. Fine. Which one? No, it is every year it is like this only. Find it. Who told you? We buy. I did not find it. You have to do that is acceptable. And ये करना नहीं Can't find it. हाँ वो कार्डबोर्ड का हाँ कार्डबोर्ड भी है ना स्टार्टिंग. चलो atmospheric pressure and winds. Draw the first diagram. I will also draw along with you. Then the whole chapter will have some good diagrams. How many? मतलब 6, 5, 6 रहेगा after. Hey, 9th standard, even if they don't ask you the diagram for any question, you have to draw. Compulsory. Draw our globe first. पूरा? बोलते हैं मुंह चपकते. Wait, बस इतना ही नोट करना. Then step by step we'll move. It's on page number 151 if you want to progressively go ahead of me, but wait, because I'll be explaining one after the other. So don't write that one, only the air here. Then subtropical pressure belt also. A bit narrow. I will not be writing low or high, then slowly and steadily.
It'd be quite like this everyday one knowledge video, something related to India, na? Yes. I have lots and lots of things. मैं WhatsApp कर रहा हूँ क्यों? इधर ही देखेंगे ना, बट मेरा नंबर है ये तेरा नंबर भी हाँ देता हूँ ये मिसयूज तो नहीं करेगा सब में बात करेगा कल आपको 12 बजे सर मुझे डाउट है पूरा करना मेरे सर पर ही what similar अभी देखिए it go very slowly because then I'll be adding so many things new. High pressure bed. Either like that is known as horse latitudes. This is known as doldrums. and It is some is not that of doldrums का meaning actually. Horse latitudes का भी meaning है. sir, do you know Dolly Chong? Ushi. Who is she? मुझे मैंने कभी Doldrum मतलब dull. मतलब zone which is having nothing. I only draw this, then wait for us. Let me explain these two, then we'll go ahead. So. Again, you have gone back. Come forward. Come forward. स्कूल में भी ऐसे बैठते हैं स्कूल में बैठ क्यों लेट नहीं बोलता तुझे जाती आ जाओ मामा सो जा so you keep circling no and you're the monitor kind of उसमें भी kind of ladies toilet में gents toilet razor gents kind of चुप रह तू kind of हाँ वही बोल रहा है kind of का मतलब क्या I'll explain but in 10th standard stop all the social work school का जो ये वो सब कट कर दो बोले कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहा है मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है बस क्या मतलब ये मॉनिटर बनाएगा सीआर वो सब नहीं थी मैं तो बचपन से कभी नहीं करता मैं मॉनिटर भूल ही वैसे हाँ तो बट बनना पड़ा क्यों मोदी जी ने रिटायरमेंट दिया तो तुझे बुलाया Shall I explain? Now look very carefully how this pressure belts and winds are going to. These are the directions of the wind and there are how many belts? 1, 2, 3 and 2, 3. Now you have to be very careful, same here, northern southern hemisphere. So you have to be very careful wherever the torrid zone is there. You see torrid zone 0 to 23.5 degrees south and 0 to 23.5 degree north. We are saying it is equatorial. Since temperature is high, what belt it will be? Low pressure or high pressure? High pressure Temperature is high, my dear. low pressure That is low pressure. And in those days, they say कि there were very windy action or natural phenomena too much. But in the equatorial region, there was not too much. अभी भी देख लो, है ना? अभी थोड़ा सा global warming ये सब है. So they say doldrums का मतलब, here the wind actions are there, but it is not going to create any havoc. You know what is havoc? So they say, तू क्या doldrum है क्या? मतलब मंद है क्या? Sorry, ये बोलना नहीं. मंद है क्या? So this zone is not mand buddhi zone. Understood? But then they say it is the Coriolis effect of the earth moving from west to east or east to west. It is from west to east. In the northern hemisphere, it is directed towards the west.
as well as in the southern hemisphere, it is directed towards the west. It is the directions of the wind just because of the equatorial low pressure belt. Clear? Let us go up and let us come down. It is not tropical, neither it is polar. And either subpolar bhi aayega, wo maine ab draw nahi kiya. But it is subtropical. Since from here the temperature starts decreasing, automatically it will be a low or a high pressure belt. High pressure belt in the north as well as low pressure belt in the high pressure belt in the south. I have not shown you the subpolar, but let us take the polar. Since temperatures are freezing, what belt it will be? Low pressure belt or a high pressure belt? High pressure belt. Abhi maine wind direction nahi dala. Okay. Now look at the wind direction as per the volume. Now here it is moving towards the west east. In which hemisphere? In northern hemisphere, and again towards the south in the southern hemisphere, towards the west only. Subtropical नहीं था, subpolar. ये मुझे लास्ट ईयर का स्टूडेंट ने बोला सर कुछ नहीं देखते, इधर है ना अप जाएगा, इधर है ना डाउन जाएगा. मतलब ऐसा मत बोल, then the explanation goes a little bit wrong. My arrow है. Abhi now very carefully look at the one I'm explaining from your book and then we will come. If you see above equatorial belt, we have northeast trade winds. वही नीचे क्या आ जाएगा? Southeast trade winds. इसका भी मैं meaning बताता हूँ. It is north hemisphere and going towards the east or west. ये पूरा east है ना? Yes. So east trade winds. What is the meaning of the trade winds? So this is south, east or west? East. ये भी east की तरफ ही है ना? Trade winds. Just write, be very careful, or if you want to write outside that also allow. ये diagram को 4 stage में फिर divide करना. Now the word is saying winds, the word is saying trade. In those days, certain major parts of the earth, the globe here and here, these wind will blow towards Indiana. अभी तो एक बाइक है जो अमेरिका बनाता है, but नाम हमारा नहीं, that is movie fiction. So why the traders from this part want to enter Asia? They will be occupying only this month. So these traders used to use those winds. So that is why it is which winds? Trade winds. समझ में आया? Okay. फिर अब देखना. They have south westerlies and नीचे north westerlies. Westerlies. It is going towards west, है ना? So it is in Northwest. is south. Because it is closer to the southern and this is northwestern. North. Write down, or pull it arrow outside and write carefully. Subtropical दिया है क्या आपको? Circumpolar low pressure दिया. अभी मैं draw करेगा उसमें. Is closer to the polar. इसको हम लोग का स्टेज में subpolar बोल देते हैं. Right, this is circumpolar low pressure belt. Circumpolar. ये diagram से कुछ भी नहीं समझेगा लेमैन, है ना? Layman, ordinary person. Okay. You are a layman? Amen. I'm not a layman. That one. Ginger. Adrak. Adrak. Good. Did you write? Polar high pressure belt, circumpolar low pressure belt. This is also polar high pressure belt, but this is circumpolar low pressure belt. अभी इसको without seeing बनाएगा. हाँ, चलो. Last page में बना. I will erase the diagram. पहले देख लो कितना belt north में है, same belt नीचे. But very careful with the one arrows है कि ना सबसे last में डालना. Wind directions. Then you will not get confused. I'll check it. Then we are moving ahead. Shall I show you electronically? It's okay. वैसे भी मैं videos दिखाऊंगा इस chapter के लिए.
Try to fix it in your mind instead of learning. इधर जाना है. हाँ जाकर है ना. हाँ why not? Okay. इसको देखना है या रुकना है? बड़े दर तो 10 की कौन है इसमें बड़े अच्छा स्टेप ठीक है. पर डैड ने क्या किया भाई तेरे लिए स्टेप आने के लिए? अरे स्टेप्स बनाया है. ऐसे ही ना. माय डैड इज वन इन दैट नोट. मतलब had लंदन में मदर ऐसे. अरे लंदन मम्मी का मदर not my mistake ना. Is calculating with the original one. I am not from her. I am from England. Confused. ज्यादा जल्दी जल्दी से. Hey, learn it. छोड़ ना. आधार कार्ड दिखाऊं लंदन वाला. उसमें मेरा नाम एल्बर्ट दिखाता हूँ. और भी चौथा बंदा आना बचा. मतलब पापा ने इधर ही विंडो स्टॉप कर दिया. फिर तो मैं बोला अफ्रीका में भी एक पापा ने बुलाया मैं कर लेता हूँ. अरे जाके ढूंढूंगा कौन है. तुझे क्या लगा है ओपनिंग? आई विल सर्च. क्या पता अफ्रीकन बाय विंडो निकला तो. ये एलबी में है. मैंने नहीं मैं करवाएंगी तू चलता है. But they are very good. But they are alternatives. In there's another thing. These are people only do all kinds of thermals. Shall I explain you once again? देखो before drawing ना one thing you keep it in your brain or in your mind. Because brain है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है. 1, 2, 3. Easy. This is equatorial. Which pressure bed? Low pressure bed. And this is subtropical. Subtropical. High. Don't draw this one as I've done it. Directly go to polar high, polar high. Clear? फिर बाद में लिखना circumpolar low. गलती से भी high मत लिख दो, है ना? This is circumpolar low. फिर बाकी विंड का डायरेक्शन तो आपको आता ही है. फिर वेस्टर्ली इधर रहेगा, ट्रेड विंड्स इधर रहेगा और ये डोलड्रम्स रहेगा और ये हॉर्स लैट बोलता है. ये गैलपिंग मतलब लैटिट्यूड उसके बाद हाँ विंड एक्शन एंड बाकी तरह फास्ट है. Did I explain? Chalo, let us take your test. Go to the last page of the same notebook. Let me erase it in such a way nothing is visible. Here. Only naming has to be careful. और कुछ तो बस नाम लिख दो सर. सब सेम. सर बड़ा कुछ तो चाहिए सर पर बनाने के लिए. हाँ बैग ले ले. इसने तूने पहना तो ले. ऐसे इधर मैंने फोड़ी सर. चूड़ी. अरे बॉटल का वो एक ले लेना. चलो बहुत छोटा है उसका. हाँ तो वो बॉटम ले ले. अरे वही छोटा है. साथ से कितना इसको बड़ा लैपटॉप वो बंदा नहीं है बराबर. तो मत कर जा. डी लेकर जा. प्रोटेक्ट कर. देखो she has already started drawing also. Just wasting that. वो बॉटल दे. Don't waste that. उसका पेंसिल पकड़ने भी आती थी तो. He's catching the pencil in a different corner and doing another side. ज्यादा मजदूरी है. अरे आइटम सर्कल ऊपर का सर्कल अलग है, नीचे का सर्कल अलग है. He's having it, huh? Why do you turn the book? Turn the chart only. पूरा जुट जाएगा. My God. What the hell? What the friend? हम भी सुनते हैं सर. एक खोल मेरे भी बना के दे. You give that particular instrument later only. पहले इंस्ट्रूमेंट की बना. Good. He the toothpick fellow है. तो नहीं बन रहा है. सर बहुत छोटा बन रहा है. Yeah, she has done free hand only. Circle. ऐसे वो लड़की है. हाँ. तो लड़की है तो फ्री हैंड लड़का नहीं बना.
ठीक है। लड़कों को टाइट रखना। का नीचे वाला लोअर की हाई कौन सा लास्ट? सर्कम देखो पोलर दैट विल बी लो ना, पोलर हाई सरकम पोलर लो। अरे पोलर हाई है तो सरकम पोलर लो ही रहेगा ना, ऑल्टरनेटिंग है। जाके आइडियाज लेकर आएगा। थोड़ा ज्यादा छोटा सर्कल बन रहा है। Hey boy, now enough. People have done the circle and they are into the. It's only time passing circle. Hey, switch it on, easy. Suffocation. Huh? There. Yes. Introduction shall I give? No sir. Done it. Put that arrow marks in wind direction and give it to me. All done. Sure. Also. Give me a pen. When last time while you were giggling, she has completed all. Good to her. First come, first basis. Come. क्या लाया? मतलब क्या आइडिया लाया? Which is the biggest this one in Calcutta, but yeah. Delbar. Oh, grand. Yes. इधर यूज तो पाँच मिनट। अच्छा वो आप लोग वो बेलापुर जाने का रास्ते पे है, तो मैं गाड़ी ऐसे तो नहीं पैसे घुमा के जाएगा तो दिखेगा उधर उसके मेट्रो स्टेशन आज बड़ा ग्राउंड में बदरपुर हॉस्पिटल। वही ना ये ग्राउंड आगे वही वाला ग्राउंड। तो वो कौन सा बेलपाड़ा जाने का रास्ते पे जाएगा तो वी कैन सी दैट ना। हाँ बेलपाड़े वो रास्ते से जाएगा तो फिर वहां से बेलपाड़ा उस कॉर्नर का लेफ्ट फ्लोर है ना, उस रोड पे राइट साइड। बट आप मेरे को एग्जैक्ट बिल्डिंग के साथ नहीं दिखेगा क्योंकि आप लेफ्ट साइड से जाओगे ना। राइट साइड में जाना। हाँ आवाज तो सुनेगा। तो एक्टर एक्ट्रेस को बुलाए कि एक्टर एक्ट्रेस आया इधर नहीं, वो पुणे में रेबल किड्स। अरे वो इधर ही आ अंधेरी में। हाँ रेबल किड्स में कौन है? नहीं वो आने में आप इसे देखो यूट्यूब पे रेबल किड इन पुणे। यस कहाँ पे बोल रहे हैं कौन है पता है? काशी से हाँ मैं कौन ना कौन है पूछना। give me a pen anybody. Second person has completed the diagram. These two students are still ये से वॉइस में आ रही है इनफैक्ट एयरपोर्ट के आगे है अब वो एरिया का नाम क्या है? मैं बहुत नगर है चलने के बाद उसका फ्लाइट का कैसा सुनेगा ना भी लाभ। मैंने बोला ना मेरा डॉक्यूमेंट गया बॉम्बे एयरपोर्ट और मैं गया पुणे। बट द फर्स्ट टाइम आई केम टू बट दो प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं? दो ड्रम को लिखना है ना वो सब। वो भी लिखना है। हाँ इम्पोर्टेंट सीएस गुड टू हिम आल्सो इन द wait वहाँ पे ना प्लेटफॉर्म बहुत डेकोरेटेड बट वो अभी मैंने सुना पुणे का एंटायर एयरपोर्ट इज मेनली फॉर द सिविलियंस नहीं ना के लिए एयर डिफेंस का। मेरा दो बार आया था, एक बार तो कनेक्टिंग फ्लाइट था, एक बार तो पुणे में रुका। एंड द पीपल ऑफ पुणे ऑल है ना लेजी एटलीस्ट मुंबई के चला रहे उनको। एंड वेयर इज दिस डंगू शेट? इट्स इन WShed. It's a very popular WShed था भाई। हाँ popular beach में शिवाजी नगर गया हम लोग। शिवाजी नगर के बाजू। इवेंट में कार वो ऐसा फटाफट दिख रहा था। अगर छोटे बहुत रहते Right now introduction. देखो इसने भी बना दिया कुछ बड़बड़ी कर। HP क्या है? HP को भाई साहब ने HB लिखा है। Where is सरकम पोलर किधर है? वो बाद में
Right on introduction. Okay, this chapter थोड़ा सा है lengthy but we will try to shorten. Atmospheric pressure. I'm giving the meaning. EP. Refers to this one. This clear. Alright, this kind of one. I'm trying to copy. The amount of Sir, yeah. In A pressure, A pressure, लिखना over force per unit area. Force per unit area. Force per unit area against a given surface. Against a given surface by the weight of the air above. Just weight of the air. Understand? Everybody knows that on the earth and in the sky, what is the big difference you feel? Huh? It is the pressure which you and me understand, force per unit area. I mean, this is a big surface where I'm applying my pressure. Not moving because this is already fixed. So I take which area? Per unit area against a given surface, and what I'm applying? Forces. And it is by the weight of the air above. Why you and me are walking on the earth and why not flying? Because one is gravity, everybody knows. Other is atmospheric pressure. I'm not very sure. They say in 1 square centimeter, there is around 8 or 9 billion atmospheric pressure on you. When you defy this pressure, or when this gravity is becoming zero, you and me will not walk and we will fly. That is what is in the space. So why this atmosphere is so important? Because every substance on the earth is exposed to which pressure? Atmospheric pressure. Then even when you dive inside the water, that is inside water body, not inside a bucket or anything, and after a certain depth, you feel your lungs are becoming heavy and you are unable to breathe. That is also a pressure, but that is water pressure. And you have to fit it with that particular mechanism and an oxygen cylinder. There it is the pressure which is applied by the water. Except that big dolphins वैसे भी ज़्यादा deep नहीं जाता, and whales and sharks, very few fishes go dive deep in. Because they are well gifted with that particular gills which can absorb the oxygen deep beneath the oceans. I remember my science teacher explaining how the submarine was invented looking at this whale only. You see, when the whale comes above, there is one small nostril above, which puffs up the air and comes up. And when it closes that one, it sinks down. That is submarine technique today. Means we not only have air pressure, we also have this water pressure as well. But this chapter we are going to understand what is. For how long can they be in water? It depends, now, because they can absorb the oxygen which is dissolved in the water, which you and me cannot do. That is why these dolphins,
which are generally afloat nature. You know what is afloat nature? वो भी ज़्यादा deep, but it is not like that whale, or it is not like that shark. And they keep limping up and down, up and down. It's not that they can absorb the air oxygen. That is not the case. But उनका जो nature ही वैसा है. And you know, fish is a cold-blooded animal. It can change with the temperature of the water, but you and me cannot. So you and me only can survive with which pressure? Atmospheric. समझ में आया? Write one more sentence. So pressure is expressed in MB. What is MB? Millibars. My college, some people write like this. But this is the spelling. It's experienced. Express, not experience. In millibars, and what is in the bracket you are writing? MB. And always use and always measured. So always measured using अभी वो diagram है. A mercury barometer. Or mercury barometer. So let's draw the diagram. I will draw it very quickly. To look at the volume and draw. है ना? Thank you. हाँ मैंने बोला ये chapters full of diagram. Yeah. The diameter तो drawing के आएगा आएगा आएगा. ये पूरा तुम लोग शेड करो. नहीं बोल के बात. हाँ ठीक है फिर भी कर ली. So vacuum. बाकी तो हाइट कर दी. I'm aligning everything right. This is deeper. It's a deeper or cross. Why do you think both the 100 people left say it better, right? So both of them. Biparty system. Huh? Biparty. By. They are drawing neatly, huh? And I'm going to give today assignment. Next week I'm going to check. Assignment. Question answers. That's it. Checklist, yeah. Next week I'll check both the chapters as well as the volume 1. And this week also I'm giving some. Nice. ऐसा बना. मेरे तो देख में अच्छा लगता है. My legs. You are artist. Without a brush and a canvas. Actually. Come to page number 165. And go to the last page, last chapter. Where we might have insolation, na? पूरा कर लिया. Any question answers might be. You have done it. Right? So take it. Draw this diagram, label this diagram. And you have any queries related to the last chapter and this chapter. School exams ke time you guys are not going to come. Sure. Because I'm worried for my Thursday only. Okay. So, but it is on 1st of October or 3rd of October? 4th of October. उसके पहले एक Thursday आ जाएगा ना? आएगा. तो वो क्या होता है? Tough. Sorry. That week. And what you do today only I'm telling. Mark the chapter which is going to come and try to only read it once
and try to mark the questions which you have a query. So 1 week before you are not going to come, I do not know. Next Thursday, along with the normal lecture, the second half of the second lecture, I will only devote for Shin. She is coming after a long time, and post the portion there. You guys have to be very clear which chapters, where questions. So that second half of the second lecture we will totally dedicate for our revision. And diagram practice, now he has done tremendously well. Please do it, especially वो high tides हुआ, low tides हुआ, solar और lunar eclipse का हुआ, lots and lots of diagrams. चैप्टर का नाम डिटेल प्लीज and I don't know how many are having some connections with your 10th standard seniors. Please look at their first 30 marks. It's only for the map, MCQ and topo. MCQs. Yes, And now topo is something which you will be having. I'm teaching SNAQ, I'm teaching, I'm saying, not a challenge, but something new for you. should I bring some? 9 वाला नहीं आती, इतना ही मैं बताया, बोला है, topo sheet है, आप तो फिर लेकर आओ. I'll teach you which is going to come in the 10th. Some schools are only picking up 9th standard topo, and majority schools are going to the नहीं है. तो तेरे लिए अभी तो लेकर आओ. Okay, चलो back up. We'll see in the next week, and revision only for your doubts I'll take it. Okay? Chalo. Let's run for our day. Best of luck. I'll try to bring that through.